कोरोना वायरस की वजह से मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना का युद्धपोत आईएनएस जलाश्व माले पहुंच गया है। वहीं दूसरा युद्धपोत आईएनएस मगर भी माले के रास्ते में है। आईएनएस जलाश्व के शुक्रवार शाम तक करीब 750 लोगों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना होने की उम्मीद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे माले के समुद्र तट पर आईएनएस जलाश्व इंतजार कर रहा है। इसके बाद आईएनएस मगर करीब 250 लोगों को लेकर देश लौटेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल सुविधा की वजह से पहली खेप में नौसेना केवल 1000 लोगों को माले से लेकर आएगी। वैसे मालदीव में करीब 3500 भारतीय लोग फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, एयर इंडिया विमान भी अबू धाबी से 179 भारतीयों को लेकर आई। I'm very pleased that the process of repatriation of overseas Indians is beginning today from the UAE, a place where we have amongst the largest diaspora of Indians in the world. This has come about today due to the joint effort of the whole Government of India, the Ministry of External Affairs, the Ministry of Civil Aviation, the Ministry of Home Affairs, and of course the Ministry of Health and Family Welfare. I'm so happy that I got a chance to go in the first flight itself since I'm pregnant, and we were a lot more worried about it. So it's a very happy thing. Thanks to embassy and the consulate, all the people supported me in the crisis time. Thanks a lot. Thanks for all the support. Actually, I'm a brain tumor patient. I'm going to Vellore CMC hospital for the primary and the detailed checkup, and also the second open surgery also. COVID-19 pandemic, Government of India has launched its biggest ever global evacuation operation. For Maldives also, the evacuation we will witness in the next few days and weeks will be the largest ever in our history. I am grateful to Indian Navy to launch Operation Samudra Setu to evacuate close to 2,000 Indians from Maldives to India by creating a virtual sea bridge. INS Jalashwa and INS Magar have already been deployed for this purpose. Evacuation will be in two phases, with the two ships first evacuating Indians to Kochi, followed by evacuation to Tuticorin. We are giving top priority to medical cases, to women, and to those who have lost their jobs. The evacuation exercise will be a big relief for Indians who have been yearning to join up with their families back in India. The evacuation exercise is also a testimony to the excellent bilateral relationship between India and the Maldives. We have got wonderful support from the government of Maldives, all the ministries and all the agencies, and that's how this exercise has become possible. इंडियन एम्बेसी ने जरूरतमंद भारतीयों को पहले भारत लाया है। भारत सरकार सबसे बड़ा एयरलिफ्ट मिशन चला रही है, जिसके जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को इस कोरोना की मुश्किल घड़ी में अपने देश लाया जा रहा है।